वेलकम बैक गाइस। पिछली वीडियो में हम यहाँ पे आए थे द फ्लोटिंग प्लेस में एंड हम निंगोंग से भी मिले थे जो कि बहुत पावरफुल लेडी है। एंड यहाँ पे आके ही पायमन ने डिमांड कर दी थी क्योंकि हमने निंगोंग के लिए गिफ्ट लाया था ना, तो रिटर्न में पायमन ने कुछ मांग लिया था। सो पायमन को ये चाहिए, ये देखो यहाँ पे मोरा के लिए। पता नहीं क्या ही करेगी पायमन। सो देखते आगे क्या होता है एंड इस वीडियो को शुरू करते। लेट्स मूव ऑन। मुझे क्या लेना है क्या ये? चेक, बस चेक। Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. हाँ चलो ले, क्या लेना है ले। Let's see what's written on it. पायमन को बिना कुछ भी There's चाहिए। a place marked with a circle on here. Oh, could it be Treasure. treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. अच्छा पढ़ ले पायमन। Sigil of permission, Huh? something, Fatui, research, copy. हाँ कुछ समझ आया? कुछ समझ नहीं आया पायमन Oh, को। that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a cheating spy discovered traces of classified Fatui Huh? research on the sigil of permission. अरे पायमन का दिमाग सच में चल रहा है या फिर? Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue, spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the sigil of permission? Paimon wonders what they're up to. पूछ ही लेते हैं ना, बाजू में ही खड़ी थी वो। Speaking of which, there's also some connection between you and the sigil of permission. हाँ कैसे? Seems there's still more for us to find out. It's all unfolding a little too perfectly. निंगोंग is clearly trying to steer us there. हाँ वो देख रही हमें। Oh, you really think so? क्या पता, मैंने बस ऐसे हवा में Should मार we not दिया। go then? No, what I mean is, Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang Ha, ha, that ha. we should confirm the truth of what she says for ourselves. या बिल्कुल सही समझी पायमन। That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. क्या पता। Anyway, we'll see if you're onto something. ओके Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. अच्छा चलो फिर। पायमन ने सोच ही लिया है तो चल ही लेते। अरे जेड चैम्बर कंप्लीट हो गया। हेड टू द लोकेशन मार्क ऑन द पेपर। अरे अरे नीचे नहीं जाना। ओके ठीक है। हाँ ये क्या है? यहाँ का प्लेस ऐसा कैसा है? ये क्या था? अच्छा ये है। पर हमने बात नहीं करनी। मैं एक नहीं समझ पा रहा, अगर मैं यहाँ से चला गया तो वापस कैसे आऊँगा? वो देगा कि परमिशन फिर से हमें? लेट्स सी, जाते हैं चलो, छोड़ो। पायमन कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी वापस आने के लिए। मुझे नहीं लगता वहाँ पहुँच पाएंगे हम, बीच में ही ये ख़त्म हो जाएगा स्टेमिना। अरे मुझे टेलीपोर्टर सर्च करना चाहिए था। कितने टेलीपोर्टर होते हैं यहाँ पे? ओके इनफ, आई एम सर्चिंग फॉर टेलीपोर्टर। ये क्या? पास में ही तो है। मैं बिना देखता भी नहीं इधर उधर, ऐसा ही चला गया जंप मार के। ये कौन सा? अरे ये तो है यहाँ पे। बारिश हो रही ना, काया को लेके फिर। एक मिनट, काया 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 कहाँ है? चलो मैंने ले लिया काया को। Where Fatui at the location written down on this piece of paper? फट्टू ही है यहाँ पे। They look really mad at us too. इट्स ओके। अरे काया तो लिया ही नहीं मैंने। व्हाट? देख लिया क्या इसने? ना। और रुक जा, मुझे बस काया चाहिए। कांट कॉन्फ़िगर नाउ। चलो छोड़ो, मैं वैसे भी कर नहीं पा रहा ना। वही नहीं, मुझे काया चाहिए ही चाहिए। मैं वहाँ पे जाके आता हूँ। हाँ यहाँ पे। अब कौन देख रहा है मुझे? इतनी दूर से देख रहा है क्या ये? अच्छा डिप्लॉय ही नहीं किया मैंने, वही सोचूं, मैंने लिया था काया। चलो फिर से वहीं पे जाता हूँ। ओए हेलो, हम फिर से आ गए।
बारिश ना खत्म हो जाए फिर हमारा पोपट हो जाएगा। कम हियर। ये देखो यही बोल रहा था मैं। नो 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 नो, इसको मारना है पहले। Nowhere to hide. Incoming. Enhanced animal module 70 absorption test. Incoming. Freeze! This one will be frozen. अरे काया को फिनिश कर दिया पूरा। What? Unexpected. नो, कौन क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहा है लगता है। हाँ आ जा, तेरे इंतजार था। बेनी 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 बेनी, नो 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 नो, इसकी मशीन डेंजर है यार। अब जाने भी देगा या नहीं? बेनित ही चाहिए इसके लिए। वाह, बेनित ने भी हक दिया। I mean, खेल में ही रहा हूँ। वाह, अरे रुक जाओ, ये क्या चीज़ है? Let's light it up. Benny's adventure team. I have failed you. इसने तो हैमर ही मार दिया पूरा। बारिश का ये एडवांटेज ले रहा है क्या अब? Cut to the chase. I'll be fine. कैसे कैसे? आई विल बी फाइन कर रही है। ओके चलो ये खिला देता हूँ। वाह, रिवाइव के लिए कोई डिश ही नहीं मेरे पे। Don't blink. Right idea. अरे यार शिट, मैं जा रहा हूँ, मैं फिर से आ रहा हूँ यहाँ पे। ये बारिश खत्म भी होगी कभी? मुझे लगा मैं इसका एडवांटेज लूँगा, लेकिन यहाँ पे तो एनिमी है। अरे वहाँ पे कुछ तो करना है क्या मुझे? शायद से यहाँ पे। Animal test 6308. मैं निकल दूँ क्या सीधा? अरे ये तो सही है फिर। या फिर मारना ही पड़ेगा इसको, ऊपर जाना है ना मुझे। अगर इसको मारना ही नहीं है तो मैं, अरे ये कौन है ऊपर? अब चलो एक को तो मारना ही पड़ेगा, एक को तो मार ही देंगे हम। वो थोड़े अनोइंग थे नीचे वाले। हिट ले ली तूने, मेरे पे काया है। अरे क्या है ये, क्या कर क्या रहा है? मैं काम करूँ क्या? मेरा द एक्शन, अच्छा समझ गया। Don't blink. ये मैदान में क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे? हेलो, कम हियर। Incoming. Cut to the chase. Freeze! ये मुझे नीचे गिरा कर ही रहेगा। Don't blink. अरे ये नीचे वाले ऊपर आ रहे हैं, देखो। Animal test 60. That's not right. I should लोल, इसने तो save on it. With sword comes shadow. मैं सच में बुरी तरह पिट रहा हूँ, लेकिन इसको मार के रहूंगा। वोट वोट वोट, वेट वेट, अरे मर जा। हाँ। अब तो हो जा।
अरे यार, तब तो इनको भी मारना पड़ेगा। मैं हेल्थ रिस्टोर कर देता हूँ सबकी। ये लोग ऊपर भी तो नहीं आ रहे। नीचे ही अपना गुस्सा निकल रहे, पता नहीं किस पे। हाँ आजा आजा, ये सही है। एक एक आएगा ना तो एक एक को मारेंगे। टेलीपोर्ट। इसको यहीं पे उधर लड़ना है शायद। अरे ये दो दो कैसे क्या आ गए एनिमीज। अब कहाँ गया ये? ये टेलीपोर्ट हो रहा है बार बार। Speed of pace! एक एक नहीं आ सकती क्या? ये सब लोग एक ही साथ आ रहे हैं। अगर ये अकेला होगा ना तो मैं इसको मार दूंगा इजीली, लेकिन ये भी आ रहा है जंप मार के तुरंत ही। Speed of light! हाँ आजा आजा, इसी की कमी थी। Everybody stand back! Don't blink! Get out of here! Out of the way! सही है, उसकी शील्ड गई। Adventure time! Incoming! Cut to the chase! Speed of light! Freeze! Oh, so sorry. इसी को मारना है पहले, ये मोटे को। अरे यार, Speed of light! Got lucky that नो। time. Cut to the chase! पूरा पेल दिया इसने तो। अच्छा इसने शील्ड बना ली। और बस Off we go! शील्ड नहीं, कवच। मैं कवच कहना चाहता हूँ। आजा आजा, इसको तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ ये सही है। ये कर क्या रहा है? हाँ ये क्या कर रहा है ऐसे? I'm going in! Incoming! अरे मर गया, सही है। अरे चलो, मोटे को तो फिनिश कर दिया हमने। Cool it. ओ मैंने इसी के लिए काया लिया था। देखो Speed of light! इसको, इसके जो ये है ना, क्या बोलते, काया की वजह से होता है। हैं? ये कर क्या रहा है? Nowhere to hide. Incoming. तो बारिश थी ना, इसलिए हमें ये हो रहा था, दिक्कत हो रही थी बहुत। अरे इसको मार। Got lucky that time. Incoming. चलो ये तो गया। इसके लिए मेरे पास वो नहीं ना, जो कैरेक्टर नहीं है। Don't blink. ओए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? What happened? अरे क्या हुआ इसको? यहाँ आके खड़ा है। मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ इसको, Don't blink. रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। Incoming. ये तो कुछ भी पावरफुल नहीं। अच्छा एक बार ये बना लेता है ना अपनी, तो फिर दिक्कत हो जाती। वैसे इतनी भी नहीं। Cut to the chase.
गया गया। अब कौन? अब देखते इंटरेक्ट नहीं, और एक है कोई तो, वो नहीं। अच्छा ये, चलो इसको तो कैसे मार पता है। Everybody stand back! Get out of here! Out of the way! Cool it. This won't अरे be वाह, frozen. ये इसी की वजह से फ्रोज हो गया। Speed of light. This is bad, I know. You are bad. Incoming. मैं बस मेरे चार्ज अटैक स्पैम कर रहा हूँ कब से। अच्छा चलो, गया गया। पूरा फ्रस्ट्रेट हो गए थे इन तीनों की वजह से। 3 नहीं 4 थे एक्चुअली, तभी इतनी दिक्कत हो रही थी। अब देखते। There are so many talismans here. And Talismans? some stacks of blank paper too. Huh? What are they for? It looks like they are copying the pattern on the talisman. Talisman क्या है अभी? Maybe they are trying to reproduce it. हाँ, हो सकता है। Paimon's seen this pattern before, but where? ये अरे हाँ, वो हम पहाड़ पे गए थे ना? Oh, Paimon knows. It looks just like the हाँ, sigil sigil of of permission the permission. child gave you. And पहाड़ पे भी था वो ऐसा ही सेम। But how did a relic of the Adepti end up in the hands of someone like Child? Suspicious. Oh, it is not just a relic क्या? Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it wasn't to be used as some old relic. हाँ, बोला था उसने। Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Talismans ये बहुत बार आ रहा है, क्या है अब ये? ओके, समझ गए। Maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission in hopes of achieving a similar effect. अच्छा ये क्या? Being able to channel divine power in battle? Whew. Sounds like pretty dangerous. Yep. Seems the Fatui are definitely up to something. हाँ, ये कुछ ना कुछ करते रहते। Maybe this paper is only a snippet of a much bigger plan. हो सकता है। And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, Yep. that's for sure. अरे हाँ, चाइल्ड तो पहले से ही सस्पिशियस है। Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. अच्छा चलो चलो। The last stop on our rite of parting preparations tour is क्यों Diwa हाँ मार्श, हाँ बोला था उसने, वहाँ पे चलते Let's चलो। go! Paimon hates being late. यप यप। मीट झोंगली एट द, सो निंगोंग का यही तक था क्या? चलो झोंगली से मिलने चलते फिर। ये रूइन गार्ड जाग जाएगा अब देखो। लेकिन मैं भाग जाऊंगा तब तक। सही है ना? अरे यहाँ तक एम कर रहा है वो। नहीं आएगी उसकी गोलियाँ। झोंगली नज़रों के नज़ारों के मजे ले रहा है। Right on time. I myself only arrived moments ago. ओह, हम टाइम के बहुत अच्छे ये है। Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? हाँ, बहुत बड़ा प्लेस है वो। It was so big Yep, and so pretty. and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. यप। Indeed. It's second to none in all of Liyue. सेकंड, फर्स्ट क्या है फिर? Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? हम बस अडेप्टाई के बारे में बात कर रहे थे। She's super rich and so generous. यप। Paimon thinks she's very फ्रेंडली, यस। बिजनेस पीपल्स आर ऑलवेज फ्रेंडली व्हेन इट सूट्स देयर इंटरेस्ट। हो सकता है। Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. ओह। Oh. So you also met with Kuching? हाँ, उससे भी मिले। What did she have to say? उसने कहा He कुछ। said the time of the Yep, Adepta यही has कहा। long passed. If even
the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? यप सेम यही बोला था. No respect for the divine. हाँ. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart, though they are both members of the Qixing. हाँ. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Ningguang is highly intelligent. Ningguang is highly ambitious. हाँ बहुत ambitious है Yes, वो. she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. हाँ वो कैसे छोड़ेगी वो उसने बनाया ना सब कुछ. The Jade Chamber is only second. हाँ. What's the most important thing to her then? अरे हाँ ये सेकंड बोला था ना तो फर्स्ट क्या है फिर. Why, Mora, of course. Makes sense. No surprise there. Yep. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue and that they aren't to be trusted. Yes उसने बोला था. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. And now they are trying to reproduce the sigil of permission. हाँ देखा था हमने वहाँ पे. हाँ पता है कैसे. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on on your guard. guard. Yes. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Diwa Marsh? हाँ झोंगली और कुछ चाहिए क्या. Yes, as a matter of fact, there is. Yes बोला ही इसने. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glazed lilies. Glaze lilies? But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Qingsa village has glaze lilies. हाँ यही पे क्यों. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. लेकिन यहाँ क्यों. No, those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. तो यहाँ क्या स्पेशल है ऐसा. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Oh. Nice. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. ठीक है झोंगली. Of course, there ये are some झोंगली जब kinds भी of आता है flowers बहुत that have बातें been करता preserved है. and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. जैसे कि झोंगली. Wild glaze देखो. lilies have the strongest fragrance. इतना नॉलेज क्यों है If we इसको. want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. ओके झोंगली as your wish. But I'll need your assistance in gathering these flowers. You mean you need me to pick up then, huh? So you need me to sing. अरे हाँ sing. Correct. That's correct. Oh. Your singing will surely bring out the strongest fragrance from the flowers. सही है फिर हम गाना नहीं गाते कभी. So how good is your singing? I can hold a tune. I'm a pro. Just step back and listen. Yep, I'm a pro. Really? Why doesn't Paimon believe you? क्योंकि पायमन को सब पता है ना इसलिए. We'll only know once he starts singing. हाँ चलो गाना गाना है अब मुझे. तो गाने का क्या हुआ. गाना था ना हमें. अच्छा वहाँ जाके करना है क्या सिंग. चलो हमारा टैलेंट भी देख लेते सिंगिंग का. अरे फ्लावर तो मिल गए. It's time to sing whenever you're ready. क्लियर थ्रोट. बार बार का है ये गाना. What happened? अरे These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand here in Liyue? पता नहीं. You got time. अरे ये तो पीछे ही पड़ गए. Don't blink! Hey!
इनके बीच में नहीं आना बीच में आएंगे तो पूरा फिनिश Get कर out of देंगे। here! Out of the way! चलो Off we go! ये कर क्या रहा है Everybody stand back! Speed of light. Got lucky that time. With sword comes shadow. Hey! ये इतने अनोइंग पहले कभी नहीं लगे आज कुछ ज्यादा ही लग रहे। Income! Hey! चलो इसको फिनिश कर देते पहले। गया? हाँ गया वो। Speed of light. Don't blink! अरे पानी के बीच नहीं जाना। Don't blink! लेकिन ये पानी में ही जा रहे हैं दोनों। इनको फ्रीज करो क्या? अरे वाह हो रहा है Incoming! चलो एक ही बचा है अब तो। Cut to the chase! Speed of ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आ गए लेकिन? Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. हाँ, those flowers put up quite a fight. Yes. This little monster is known as a whopper flower. हाँ पता है हमें। Strange. These petals look interesting. कैसे? The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. अच्छा ठीक है। Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of हाँ parting? चाहिए क्या हमें वो? Unfortunately, No. no. फिर क्यों लेंगे हम उसे? That's so lame. Excuse me. अरे ये कौन अब? Are you searching for glaze lilies? गैन न्यू आ गया। Oh, hey, It's what's her face? Paimon can't remember. greeting गैन न्यू। Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. यस हम कैसे भूल सकते हैं? अरे ये तो वो है ना हमें मिलने आई थी देखो। That reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? एकदम मस्त। Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. अरे हाँ इसने बताया नहीं ये बस हमें इनविटेशन लेटर देने आई थी। Didn't I tell you the way? Surely I did. नहीं बताया। We found the way on our own. It isn't a secret, so perhaps you just assume we knew, हैं? Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. सच में ये भुलक्कड़े। Something seems a little off about Ganyu. She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude अरे now? हाँ 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 तब तो बहुत सीरियस थी वो। Oh, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now I am simply out on a stroll to see the flowers. अच्छा इसलिए फिर तो कचिंग भी ऐसी ही होगी। You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? बोल बोल। Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. ओह अच्छा ऐसा है। Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. ठीक है ठीक है। Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. So that means Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, ओह only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. हाँ जैसे कि वेंटी हमारी। The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. अच्छा वेंटी अकेली रहेगी Of मीन्स। the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro.
He is merely 500 years old, ओह whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. ओके ओके समझ गए हम. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. So what do you think of this Farewell. farewell? Huh? This Little is a sudden. little sudden. क्या कहना क्या चाहती है? As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. अरे इट्स ओके, अब क्या ही कर सकते हैं हम. But as an adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and adepti has now reached its end. इट्स एंड क्यों, हम है ना सब. Huh? Did you just say as an adeptus? ओ इसका मीन्स ये भी एक एडेप्टस है. Yes, I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. ओ ये इतनी पुरानी है मीन्स. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. Oh, so you are half Chilean. That's explain the horns. So you are how old? That explain the forgetfulness. Yes, कितनी पुरानी है ये? Well, let's save that conversation for another day. Yes, yes. You say that you are here looking for glaze lilies? हाँ, यप यही लेने आए हम. I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. ओह सच में? We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? हाँ. Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. ओह talented है ये means. Wow, so you really know your stuff too. Thanks, Ganyu. Thanks Ganyu. No, it is you who I should be thanking. क्यों कैसे? If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. सच में? If you would excuse me, I should return to my work now. Good luck. Bye. Good luck. चली गई ये. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Mostly? अब क्या रह गया? Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Zhongli, you seem suited to working in agriculture development, yes? Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. ये भी सही है. Beginning a new undertaking is ये देखो always फिर से चार difficult हो at गया ये. first and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. Okay. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Wow. See, Zhongli sounds like he's already seen it all. So इसको बहुत एक्सपीरियंस लग रहा है. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. अच्छा चलो चलो. बहुत दिन से गए भी नहीं वहाँ पे. Head back to the white glaze lily मिल गया हमें. सही है. चलो लियो में चलते डायरेक्टली. सो गाइज मैं लियो में तो आ चुका हूँ, लेकिन इस एपिसोड को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में. देखेंगे आखिर ये राइट ऑफ फिर ये फेयरवेल जो भी है ये होगा या नहीं. कब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद अगली वीडियो में हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते. सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.